हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है एक वेडिंग मेकअप लुक या पार्टी मेकअप लुक, या आप जो भी समझ सकते हैं। किसी भी ओकेजन में आप ये मेकअप लुक कर सकते हैं। स्पेशली ये है एक वेडिंग मेकअप लुक बिकॉज ये वेडिंग सीजन चल रहा है। सो इफ यू वांट टू नो, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये वेडिंग मेकअप लुक है। सो हम किसी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम पे नहीं डिपेंड करेंगे। वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग फाउंडेशन ऑन आवर फेस। दैट आई विल बी यूजिंग दिस Maybelline सुपर स्टे फाउंडेशन। Yeah, so let's take it and apply it on our face. मैं इसमें इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स लूंगी। Apply it on my face. Okay, so I'm done with my foundation on my face. Next thing, what I'm going to use is this concealer, my favorite Wet n Wild concealer. I'll apply it on my eyes in all the affected area, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है। फुल जॉब बोल सकते हो। एंड दिस इज द वे आप अपनी कंसीलर को अप्लाई करते हो, इन अ राउंड मोशन। That's it. My base is completely done. मैं ज़्यादा केकी बेस नहीं बनाना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट थिंग जो हम बनाएंगे विल बी आवर आईब्रोज, एंड मैं कोई मिनीसो की आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ करने वाली हूँ। आई विल बी यूजिंग फ्रॉम दिस पैलेट दिस ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड, एंड या आप कोई भी ब्राउन कलर का शेड या ब्लैक कलर का शेड या जो भी आपकी आईब्रो का शेड है अपनी आई शैडो पैलेट्स में से चूज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बाय अनदर प्रोडक्ट फॉर इट, बट अगर आप चाहते हैं कोई अलग प्रोडक्ट आईब्रो के लिए तो आप वो भी खरीद सकते हैं। मैं इसको एंगल दूंगी इस पुली के साथ। अब मैं जाऊंगी अपनी आईज की तरफ। सो हम एक प्यारा सा आई मेकअप लुक करेंगे। सो आई एम डन विद माई आईब्रोज। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू माई आईज। ओके, सो हम आई मेकअप करने वाले हैं। मेरा आउटफिट पिंक कलर का है और गोल्डन कलर का है। सो मैं कुछ वैसा ही मेकअप करने वाली हूँ, अ गोल्डन मेकअप लुक। सो जब भी आप आई मेकअप करते हैं ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको पहले अपनी आईज को लाइक ट्रांजिशन देना होता है। लाइक लाइटर शेड से शेड स्टार्ट होता है वो। I'll be taking a yellow sort of shade for my eyes. I'll be taking my finger and going to apply a golden shade on my eyelid. क्रीज पे नहीं लगाना है, हमें सिर्फ eyelid पे यूज करना है इसको। This is how it's going to come out to be. मेरी ड्रेस पिंक है तो मैं इसके ऊपर प्लम बेबी पिंक कलर यूज करने वाली हूँ।
This is how it's going to come out. Next I'm going to take my this Hilary Rhoda Cash Shadow palette and मैं इसमें से ये कलर चूज करूँगी, ये कलर चूज करूँगी and put it on my eyes. I'll be taking a brown color and applying it on my eyes. Okay, so this is how it's going to look like. अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ थोड़ी सी अपने आईज को कर्ल करूँगी, थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड आई लैशेज. दैट्स इट. ओके, सो आई हैव अप्लाइड माई आई लैशेज. नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आंखों पे ये लैश बैंड दिख रहा है. मैं इसको कवर करने के लिए आई बी यूजिंग दिस टेकोकी का eyeliner. Okay, so I'm done with my eyelashes and everything. Okay, now I'll be moving on to my lips and I'll be applying this Lakme 925 की Rose Plum lipstick on my lips. Okay, so now I'll be putting some blusher on my face. So nothing special, I'll be using the same lipstick and I'm going to apply it on my cheeks. And you can use any brush or anything. I'll use my fingers to spread on my face. आपको हमेशा वही ब्रश लगाना चाहिए जिस कलर की आपकी लिपस्टिक होती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके फेस को एक सेम सॉर्ट ऑफ कलर दे देता है. आपको अपना मेकअप बिल्कुल फिक्स चाहिए होगा फॉर अबाउट 10 hours or 12 hours. So I'll be using this PAC makeup fixer. It's the PAC micro finish makeup fixer on my face so that ये मेकअप हटे नहीं जल्दी से. And you should always close your eyes जब आप मेकअप फिक्सर यूज कर रहे हो. Fragrance of this makeup fixer, it's amazing. So this is how it is. This is how the makeup comes out to be. अगर आपको हाइलाइटर लगाना है तो आप लगा सकते हैं. मेरा बिल्कुल मन नहीं है हाइलाइटर लगाने का, हालांकि मुझे पसंद है, बट स्टिल अगर आपको हाइलाइटर लगाना है तो आप वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर जा सकते हैं, मेगा ग्लो में जा सकते हैं. इवन द स्टिक वन इज गुड. बट या, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल. आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ. प्लीज़ बताइए. आई नीड योर ऑनेस्ट ओपिनियन इसके बारे में. आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. बाय बाय.